तपाईँहरूलाई म चाहिँ यहाँको 360 भ्यू प्लस एरियल भ्यू देखाउने कोसिस गरिरहेको छु। लेट्स सी द्याट। हिजोदेखि हाम्रो टार्गेट चाहिँ थियो श्रीअन्तु, त्यसपछि फिकल अनि हुँदै आज चाहिँ हामी कन्याममा आइपुगेको छु। भ्यू 360 भ्यू राम्रो नभए पनि अलमोस्ट यस्तो खुसी मान्नुपर्छ। यति बेला हामी एनजी ब्लकमा छौँ र नयाँ नयाँ ठाउँ एक्सप्लोर गर्ने क्रममा हुन्छ। यति बेला ट्राफिक कन्याम लुक एट दिस गाइज। यहाँबाट चाहिँ हाम्रो श्रीअन्तु लगायत एकदमै राम्रो क्लियर भिजन देख्न सकिन्छ। यहाँ एकजना ब्युटिफुल लेडी हुनुहुन्छ। हेलो, हाई, हाउ आर यु? हजुर कहाँबाट आउनुभएको? तरबाट घुम्न आउनुभएको? कस्तो लाग्यो त? सी, थ्याङ्क यू सो मच। यहाँ चाहिँ फोटो सेसन र फोटोहरू बनाउने कार्यक्रम पनि हुन्छ गाइज। यहाँ हाम्रो प्रशस्त मात्रामा होमस्टेहरू पनि देख्न सकिरहेको छु। यतिखेर ठ्याक्कै हामी चाहिँ यहाँबाट चाहिँ सिलगढी पनि देख्न सकिन्छ भन्ने सकिन्छ है गाइज। देख्नुभयो नि गाइज, यो कन्यामको हाम्रो एकदमै राम्रो प्लेस छ। यहाँ फोटो सेसन लगायत सम्पूर्ण भइरहेको छ। सबैजनाले यो जुन तल्लोपट्टिको साइड चाहिँ एकदमै राम्रो भ्यू देख्न सकिन्छ है। क्लियर भ्यू नभए तापनि यो जुन माथि देख्छ नि, यो चाहिँ श्रीअन्तु डाँडा हो है। हामी चाहिँ इटरी, दमक, पिप्तामोस, गबारे, चाराली हुँदै कन्याम। यति बेला कन्यामै छौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी उसमा थियौँ के फिकल, त्यसपछि अर्को ठाउँ के भन्छ इन्डियाको बोर्डर दार्जिलिङ। यहाँबाट चाहिँ सी गाइस लाइक स्वर्गभन्दा कम छैन है। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो जति पनि भिडियोहरूलाई चाहिँ हजुरले मन पराउँदै आउनुभएको छ। मिलियन भ्युज छ। सी गाइस, सुन्दर भ्यू छ। एकदमै राम्रो भ्यू। So much. सुन्दर सुन्दर फोटोहरू छ है।
हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु एनजी ब्लग। यति बेला हामी ठ्याक्कै कन्याममा आइपुगेको छौँ। मौसम एकदम क्लिन एन्ड सफा छ। अराउन्ड कति 6:30 भइसकेको छ, 6:30 PM। लुक एट दिस गाइस, एकदम राम्रो छ। प्रकृतिसँग रमाउँदै हामी चाहिँ यति बेला ठ्याक्कै इलामको कन्याममा आइपुगेको छौँ। नयाँ ठाउँ एक्सप्लोर गर्ने क्रममा हामी हाम्रो पर्यटक नगरी वान अफ द मोस्ट प्लेस पूर्वको पर्यटकीय ठाउँ इलाममा आइपुगेको छु। तपाईँहरूले एनजी ब्लग त हेरिराख्नुभएको छ, सबै ठाउँहरू हेरिसक्नुहोस्। आज कन्यामको भ्यू देखिराख्नुभएको छ, एकदमै क्लिन। साउन्ड भरौको झरी भए पनि हल्का खुलेको छ मौसम। तपाईँहरूलाई म चाहिँ यहाँको 360 भ्यू प्लस एरियल भ्यू देखाउने कोसिस गरिरहेको छु। लेट्स सी देम। हिजोदेखि नै हाम्रो टार्गेट चाहिँ थियो श्रीअन्तु, त्यसपछि टिकल, अनि हुँदै आज चाहिँ हामी ठ्याक्कै कन्याममा आइपुगेको छौँ। भ्यू 360 भ्यू राम्रो क्लियर नभए पनि अलमोस्ट खुसी मान्नुपर्छ। यति बेला हामी एनजी ब्लगमा छौँ र नयाँ ठाउँ एक्सप्लोर गर्ने क्रममा हामी चाहिँ यति बेला ठ्याक्कै कन्याम। लुक एट दिस गाइस, यहाँबाट चाहिँ हाम्रो श्रीअन्तु लगायत एकदमै राम्रो क्लियर भिजन देख्न सकिन्छ। यहाँ एकजना ब्युटिफुल लेडी हुनुहुन्छ। हेलो, हाई, हाउ आर यु? हजुर कहाँबाट आउनुभएको? तरबाट घुम्न आउनुभएको, कस्तो लाग्यो त? सी, थ्याङ्क यू सो मच। यहाँ चाहिँ फोटो सेसन र फोटोहरू बनाउने कार्यक्रम पनि हुन्छ गाइस। यहाँ हाम्रो प्रशस्त मात्रामा होमस्टेहरू पनि देख्न सकिरहेको छौँ। यतिखेर ठ्याक्कै हामी चाहिँ यहाँबाट चाहिँ सिलगढी पनि देख्न सकिन्छ है गाइस। देख्नुभयो नि गाइस, यो कन्यामको हाम्रो एकदमै राम्रो प्लेस छ। यहाँ फोटो सेसन लगायत सम्पूर्ण भइरहेको छ। सबैजनाले यो जुन तल्लोपट्टिको साइड चाहिँ एकदमै राम्रो भ्यू देख्न सकिन्छ है। क्लियर भ्यू नभए तापनि यो जुन माथि देख्छ नि, यो चाहिँ श्रीअन्तु डाँडा हो है। हामी चाहिँ इटरी, दमक, बिप्तामोस, दोबारे, चाराली हुँदै कन्याम। यति बेला कन्याममै छौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी उसमा थियौँ के फिकल, त्यसपछि अर्को ठाउँ के भन्छ इन्डियाको बोर्डर दार्जिलिङ। यहाँबाट चाहिँ सी गाइस, सी लाइफ हेभन, स्वर्गभन्दा कम छैन है। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो जति पनि भिडियोहरूलाई चाहिँ हजुरले मन पराउँदै आउनुभएको छ। मिलियन भ्युज छ। सी गाइस, एकदमै राम्रो सुन्दर भ्यू छ। एकदमै राम्रो भ्यू, so much. सुन्दर फोटोहरू छ है।
बाबा आज म लिनलाई
Shake and win millions of prizes with the AliExpress $1 challenge. Get unreal deals for just $1. Win $10,000 in flight credits and a $3,000 AliExpress shopping spree. Download, shake, win. Hello, friends. Have you ever dreamed of a place that feels like a whole country packed into one city? Well, I found it. It's a vibrant, colorful, and incredibly friendly city in eastern Nepal called Dharan. People here call it Mini Nepal. And you know what? They're right. It has a little bit of everything. You have the warm plains of the Terai on one side and the cool green hills of the Mahabharat range rising up on the other. It's this amazing meeting point of different landscapes. And that's just the beginning of its magic. The moment you arrive, you feel this wonderful energy, a mix of old traditions and new excitement. They also call Dharan the gateway to the hills, and it's the perfect name. Imagine standing at the bottom of a giant, beautiful staircase that leads up into the mountains. That's Dharan. It's the starting point for so many adventures into the eastern Himalayas. But before you even think about trekking, you have to explore the city itself. It's located in the Sunsari district of Province Number 1, nestled right at the foothills. The climate here is just fantastic. It's mostly tropical, so it's warm and pleasant for much of the year, but you get that cool mountain breeze that reminds you how close you are to the clouds. It's the kind of weather that just makes you want to walk around and smile. Now, let's talk about the people, because that's where the real story is. Dharan is home to around 150,000 residents, and it's a beautiful mix of different ethnic groups. You have Rai, Limbu, Newer, Brahmin, Kshetri, and so many others living side by side. It's a true melting pot of cultures, and everyone brings their own unique flavor to the city. Walking through the streets, you hear different languages, see different traditional clothing, and smell different kinds of delicious food cooking. It's this incredible diversity that makes Dharan feel so alive and so welcoming. Everyone has a story, and they are so happy to share it with you. What I love most is how this city balances its two sides. On one hand, it's a bustling, modernizing hub with cool cafes, shops, and a youthful vibe. On the other hand, it's deeply rooted in its history and traditions. You can spend the morning exploring an ancient temple and the afternoons sipping a great coffee in a trendy spot. This blend of old and new, of plains and hills, of different cultures all living together in harmony, that's the real soul of Dharan. It's not just a place on a map, it's an experience, a feeling. And folks, it's a feeling you're going to absolutely love. Every city has a story, and Dharan's story is really fascinating. It wasn't always the busy city you see today. Long ago, it was just a small settlement in the middle of a dense forest. Its modern history really began in the 1950s. This is when the British government established a recruitment center here for the famous Gurkha soldiers. These brave soldiers from the hills of Nepal became legendary for their courage. Dharan was the place where young men would come to join the British Army. This decision completely transformed the town, turning it from a sleepy village into a bustling center of activity. You can still feel that history in the air. This Gurkha connection is so important to understanding Dharan. It brought people from all over the eastern hills to the city. Rai and Limbu communities, known for their martial traditions, were among the first to settle here in large numbers. They brought their unique cultures, their languages, their music, and their food. This created a foundation for the multicultural city that Dharan is today. The city's layout, with its clean, planned neighborhoods, is also a legacy of this era. It feels organized and easy to navigate, which is a wonderful surprise. The Gurkha history isn't just in a museum, it's in the families, the stories, and the very spirit of the people. As more people came, Dharan grew into a vibrant mosaic of ethnicities. After the Gurkha Center, other groups like the Newers, who are incredible artisans and traders, moved in and set up businesses. Brahmins and Kshetris from the hills and plains also made Dharan their home.
Each group added another layer to the city's cultural fabric. Imagine a beautiful quilt, with each patch representing a different community, all stitched together to create something warm and wonderful. That's Dhahran. This diversity is the city's greatest strength. It means more festivals, more types of food, and more reasons to celebrate life. Today, Dhahran is a city that honors its past while looking to the future. It's a major educational and health hub for eastern Nepal, with universities and hospitals that serve the entire region. But it hasn't forgotten its roots. You still see traditional homes next to modern buildings. You hear traditional folk music playing from a shop while a new pop song plays next door. The city is a living, breathing example of how different cultures can come together and create something new and beautiful. It's a story of migration, bravery, and community. And it's a story that is still being written every single day. If there's one thing I learned about Dhahran, it's that these people love to celebrate. And with so many different cultures living together, the festival calendar is packed all year round. It's amazing. One of the biggest and most important festivals is Dashain. This is a huge Hindu festival celebrated all over Nepal, and in Dhahran, it's a massive family affair. For 15 days, the city is buzzing with energy. Families get together, elders give blessings, and everyone flies kites. The skies above Dhahran are filled with colorful kites, and it's just a beautiful sight. It's a time of joy, feasting, and community spirit that you can feel on every street corner. Right after Dashain comes Tihar, the Festival of Lights. Oh, you have to see this. For 5 days, the entire city is decorated with oil lamps, candles, and colorful electric lights. It looks like the whole city is covered in jewels. Each day of Tihar has a special meaning. One day they worship crows, another day dogs, and on another, cows. It's all about showing respect for nature and the animals that are part of our lives. The main day, Lakshmi Puja, is when people light up their homes to welcome the goddess of wealth. Walking through Dhahran at night during Tihar is like walking through a fairy tale. But the celebrations don't stop with Hindu festivals. The Kirat communities, mainly the Rai and Limbu people, have their own beautiful festivals. One of the most important is Chasok Tangnam. This is a harvest festival where they give thanks to the land and their ancestors for a good crop. People dress in their stunning traditional attire with colorful textiles and unique jewelry. They perform traditional dances like the Daan Nach or Paddy dance and Chayabrung Nach. The music, played on traditional drums and instruments, is so rhythmic and full of life. It's a wonderful opportunity to see the ancient traditions of the Kirat people up close. What's truly special is how everyone participates in each other's celebrations. During Dashain, you'll see people from all backgrounds sharing greetings. During Chasok Tangnam, the whole city comes alive with the spirit of the harvest. And then there's Buddha Jayanti, celebrating the birth of Lord Buddha, which is observed with peace and prayer at the local monasteries. This religious harmony is the real beauty of Dhahran. It's not just about tolerance. It's about genuine participation and respect. People don't just live next to each other. They live with each other, sharing their joys and their traditions. It's a beautiful lesson for the rest of the world. OnePlus के ये फोन Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के अंदर अभी तक की सबसे बेस्ट प्राइसिंग पर मिलने वाले हैं। तो भाई सबसे पहला है OnePlus 13 Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर के साथ में अप टू 24 GB रैम के साथ, जहां पर आप एकदम तगड़ा 120 FPS का गेमिंग एक्सपीरियंस ले सकते हो। 6000 mAh की बैटरी विद 100 वाट चार्जर और इवन 50 वाट का वायरलेस चार्जिंग और इवन डिस्प्ले फर्स्ट क्लास और साथ में Aqua Touch 2.0 और मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस में तो कोई तोड़ नहीं। इवन यहाँ पर स्पीकर आउटपुट भी तगड़े और 50 MP Hasselblad कैमरा विद डॉल्बी विजन एंड एक्शन मोड के साथ में ये फोन मिलता है, जहां पर आपको प्रीमियम डिजाइन इतने सारे क्रेजी स्पेक्स के साथ में ये फोन आपको मिलेगा दी बेस्ट प्राइसिंग जो है 58,000 रुपीज। और भाई कॉम्पैक्ट फोन में सबसे क्रेजी फोन जो है OnePlus 13S, ये आपको मिलता है सेम Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर और ऊपर से इस साइज में बड़ी बैटरी, अच्छा चार्जिंग नंबर और कॉम्पैक्टनेस के साथ में जो लाइट वेट ये कैरी करता है ना भाई, उसका भी कोई तोड़ नहीं है। और AI के लिए यहाँ पर आपको एक प्लस की मिलता है, जहां पर AI माइंड और बहुत तगड़े फीचर्स आते हैं AI के अंदर और 50 MP मेन टेलीफोटो लेंस और 32 MP सेल्फी और 4K डॉल्बी विजन रिकॉर्डिंग यहाँ पर आप कर सकते हो
इस कॉम्पैक्ट से फोन में। और ये फोन भी प्राइसिंग में क्रेजी होने वाला है। 48,000 तक मिलेगा सब कुछ ऑफर लगा के, और 36,000 में मिलेगा OnePlus 13R, जहां पर स्नैपड्रैगन 8 Gen 3, 12GB रैम, BGMI पे 120 FPS का गेमिंग एक्सपीरियंस, 6000 mAh की बड़ी बैटरी और 1.5K Pro XDR डिस्प्ले और ट्रिपल कैमरा के सेटअप के साथ में तगड़े आउटपुट फोटोज और वीडियोस में। और इवन डिस्प्ले में भी ड्यूरेबिलिटी है जो है गोरिल्ला ग्लास 7i के साथ, और अलर्ट स्लाइडर प्यारा वाला। और इस सेल में OnePlus 13R मिलेगा 36,000 रुपीज का। तो भाई ये तीनों फोन की जो प्राइसिंग है लिटरली बहुत ज्यादा क्रेजी ऑफर के साथ में आई है, तो ये ऑफर मिस मत करना इस OnePlus दिवाली फेस्टिव सेल में। और यहाँ पर आप इसे Amazon और साथ में oneplus.in से भी ग्रैब कर सकते हो। Rest of the world. All right, let's get out and explore. Dharan is filled with amazing places to visit, each with its own special story. First up, you have to go to the Buddha Suba temple. This place is famous, and not just for its religious importance. It's known for the bamboo plants that grow here, which strangely have no tips. The legend says that a hunter, Buddha Suba, once Hello guys, welcome to NG Vlog. साथीहरू सम्पूर्ण दर्शकहरू तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ। जय बाबा विश्वकर्मा।
भिड कति छ एकछिन गयो हामी त्यहाँ दर्शन गरेर आउँछौँ साथीहरू कति राम्रो ठाउँ ल वाउ हाम्रो राइडरहरू रेडी छ हाम्रो राइडरहरू एकदम रेडी छ आज हाम्रो राइडिङ चाहिँ कहाँ हुन्छ भनेर थाहा छैन साथीहरू सी लुक एट दिस भिडियो भइरहेको छ सक्नेले गर नसक्ने गर पर हो ल साथीहरू यति बेला चाहिँ हामी चाहिँ विश्वकर्मा बाबा विश्वकर्मा पूजा गर्ने ठाउँमा आइपुगेको छौँ एकदमै भिडभाड छ गाइस लुक एट दिस है आज हाम्रो यहाँ भित्र चाहिँ जानु नसक्ने अवस्था छ बाहिरबाट एकदम दर्शन गर्यो हाम्रो विश्वकर्मा बाबाले चाहिँ एकदम सुख र शान्ति हरेक यात्रामा सफल होस् भनेर चाहिँ यहाँ भिडियो बनाइरहेको छु जय विश्वकर्मा बाबा र माथिसम्म लाइन छ है गाइस ल एकदम यहाँ माथि माथि जुम गरेर तानेको छैन यहाँ चाहिँ लाइन छ एकदम लाइन भिडभाड बढेको छ भिडभाड बढेसँगै आज म चाहिँ यहीँबाट दर्शन गर्दैछु है गाइस दर्शन गर्दैछु हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम भिडभाड छ है 05 ल टाढो टाढो जय विश्वकर्मा बाबा
फोटो भिडियो वेलकम टु एनजी ब्लग यति बेला चाहिँ हामी ठ्याक्कै लिङ्गबारीमा भएका दामी छ लिङ्गबारी Recommend hot this season for you. Come to Alibaba.com, flexible customization of your products immediately. Hello, friends. Have you ever dreamed of a place that यो चाहिँ हाम्रो धरानको गुम्बा आज हाम्रो यहाँ आगोको काम हुन लागेछ है पहिला आगो चारैतिर बन्द छ चढ्ने ठाउँ छैन माथिल्लोपट्टि एउटा आगो लाग्यो तपाईँले यताबाट चाहिँ पानी हान्ने ठाउँ सुरुको दिनमा त हामी आकाशबाट कालो कुहिरो देख्दा पनि त्यो भाषा याद आउँछ सिलिन्डरहरू पड्किन सिलिन्डरहरूको चाहिँ खासै यो थिएन एउटा सानो यो बाहिर तर तलै नै सिलिन्डरले अलि उता
अन्तिममा त्यो कल्लेडोलाई यो लाइनसम्म चाहिँ बराबर होस् न भट्टाभट हाम्रो चाहिँ बौद्धमा चाहिँ लुङडोर लाउने काम हुँदैछ अझै हाम्रो जेएनजी भइसकेको अझै एउटा दुईटा 5-6वटा हुँदैछ ल छिराउनु जान्नु पर्यो नि के कसो भन्नु त्यहाँ त त्यसो छिराइ मात्र छ ठुलो त त्यहाँ बनाउनु भयो नि त पहिले ठुलो बनाएर पो छिराउनु पर्यो अब यो बनाउनु बाँकी छ त्यहाँ एउटा साथी आसन कहिले आउनु छ भनेर पर्खिरहेको छ हजुर उसको उस्तै साइज मिल्यो यो माथिको बाँस चाहिँ अलिकति साइज मिलेन हामी चाहिँ लुम्बिनी जाँदैछौँ है थपिँदै जान्छु नि त अनि मिनी लुम्बिनीमा पुगिहाल्छु आमाहरू दाजुहरूको हजुर बसेर गरौँ न जज ल बौद्ध चारधाम धार्मिक पर्यटन केन्द्र स्थापना 2055 हामीले चाहिँ हाम्रो आगोको लुङडोर दर्जु लगाउने काम सकेर आइपुग्यो है टेम्पोमै जानु न काका टेम्पोमा जानु ठुलो जानु औरतो जानु न अब चाहिँ बन्द गरिदिनु फेरि पसिहाल्छ क्या नभए ल आइपुग्यो है आइपुग्यो 12 बजिसक्यो साथी साबुन किनेर नुहाउँदा भइहाल्यो लुङडोर गाडेर सबजनाको भिडियो पनि निकाल्नु जाउँ न त ल जाउँ राम्रो भिडियो पायो त
बेला हामी केही गुम्बामा छौँ अनि हाम्रो नानी यहाँ हेर्नुहुन्छ ani kan niकाल्नु हाम्रो भान्जी यहाँ भान्जी